Hi students, welcome to Chaitanya Mathematics Academy classes. Now this one is intermediate first year maths B paper. Okay, so chapter is pair of straight line chapter, long question number 5. Okay, find the condition for the line joining the origin to the point of intersection of the circle x square plus y square equals to a square and the line lx plus my equal to 1 to coincide. Okay, so previous problems, compared to the previous problems, this one is the lines are coincide. Lines are coincide means in pair of straight lines, lines are coincide means the condition is h square equals to ab. Okay, the lines are coincide means the condition is h square equals to ab. Okay, so means we have to find out h value and we have to find out a comma b value. Main problem is find the condition. Okay, we have to find out the condition. To find out the condition we need h value and a value and b value. Okay, coincide, lines are coincide बोल के दिया. So lines coincide बोले तो क्या है कंडीशन, h square equals to ab means अपने को a वैल्यू होना, b वैल्यू होना एंड h वैल्यू होना. सो वो वैल्यूज होने के लिए अपन फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस इक्वेशन करना पड़ता. प्रीवियस प्रॉब्लम सेम, द लाइन ऑरिजिन the line joining the origin means we have to homogeneate the equation. Okay, right. First of all, given curve or given circle is x square plus y square equals to a square. Let it is equals to 1. Okay, next or okay, x square plus y square equal to a square means we have to write x square plus y square plus a square become minus a square equals to 0. Let it is equation number 1. And given line equation, what is the line? Given line is lx प्लस my इक्वल्स टू 1. एक्चुअल होमोजीनिएट करने के लिए अपने को कौन सा वैल्यू होना, 1 का वैल्यू होना. सो प्रीवियस प्रॉब्लम में अपन क्या करें, LHS में और राइट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट रहा था उसको राइट साइड में ले गए, बाद में डिवाइड करें तो अपने को 1 वैल्यू आया. बट इन दिस डायरेक्टली 1 वैल्यू गिवन विच इज lx प्लस my. सो वी हैव द वैल्यू, 1 वैल्यू इज lx plus my which is equation number 2. This line is very important. Homogeneate the equation 2, homogeneate equation 1 with the help or with respective equation number 2 or line 2. Okay, homogeneate the circle equation number 1 with respect to line equation number 2. Homogeneate means the circle equation x square term as it is, y square term as it is, x term should be multiplied with 1 means there is no x term, right? Y term should be multiplied with 1, but in this there is also no y term. Okay, in this there is no x term and in this there is no y term. कांस्टेंट इंटू 1 स्क्वायर. ओके, एक्स टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, वाई टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट को 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना. बट इसमें एक्स टर्म नहीं है, वाई टर्म नहीं है, ओनली कांस्टेंट है. मींस कांस्टेंट टर्म शुड बी मल्टीप्लाई विथ 1 स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस 1 वैल्यू, एक्स स्क्वायर वैल्यू एज इट इज, वाई स्क्वायर वैल्यू एज इट इज into a square into 1. What is one value? We have one value is lx plus my. Okay, lx plus my to the whole square equals to 0. Right. So this one simplification, x square plus y square minus a square of a plus b whole square. Simplification of a plus b whole square. A square means l square x square. Okay, plus b square means m square y square plus 2ab means 2 into lx into my means 2lm xy equals to 0. So whole square completed. Now multiply with minus a square. So starting x square plus y square as it is minus a square into first term l square
x square. Next minus into plus minus a square into second term means a square m square y square. Next minus into plus minus a square into 2lmxy means a square or 2lmxy into a square equals to 0, right? So इक्वेशन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपन? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के मोड में कन्वर्ट करना है. मीन्स एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स वाई टर्म, वाई स्क्वायर टर्म. ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मीन्स एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स वाई टर्म एंड वाई स्क्वायर टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल let x square is the common. X square is the common means 1. X square is the common means minus a square l square. Only x square common. Okay, x square common completed. Next y square common. Y square common means in this 1 and y square common means minus और एक्स वाई टर्म लिखना है पहले, बाद में वाई स्क्वायर टर्म लिखेंगे. ओके, फर्स्ट एक्स स्क्वायर टर्म देन एक्स वाई टर्म. देयर इज ओनली वन एक्स वाई टर्म माइनस 2lm a square of एक्स वाई. ओके, clear? Minus 2lm into a square of xy. Then y square is common. Y square is common means 1. In this y square common means a square m square of y square equals to 0. Okay, so now which is equals to ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Compare with सो ऑलरेडी इसमें स्मॉल लेटर्स है ना, अपन कैपिटल लेटर्स ले लेंगे. ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर b कैपिटल by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, सो 2hxy. ओके, 2hxy कैपिटल लेटर्स ले रहे ना, राइट? एक्चुअल स्मॉल लेटर्स रहता बट अपन कैपिटल लेटर्स कहीं को लिए. ऑलरेडी इक्वेशन में स्मॉल लेटर है ना, इसलिए अपन क्या करें, कैपिटल लेटर्स लिए. कंफ्यूज नहीं होना, बोल के कंफ्यूज नहीं होते सर, स्मॉल ए से ले सकते बोले तो ले सकते, नो टेंशन. ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैन बी टेकन एज ए. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैन बी टेकन एज ए मींस a equals to 1 minus a square l square. Okay, and xy coefficient can be taken as 2h. xy coefficient means including minus, so minus 2lm a square. Okay, and b square, b value means y square value. Y square value means 1 minus a square m square. y square value बोले तो वहाँ पे y square coefficient है. Okay, y square coefficient. Okay, x square coefficient can be taken as a, xy coefficient can be taken as 2h, y square coefficient can be taken as b. Okay, so a value ले लिए, 2h value ले लिए and b value ले लिए, right? So next lines are given that lines are coincide. Okay, so lines are coincide बोल के दिए, that is lines are coincide means h square equals to ab. Actual condition is in small letters, h square equal to ab, but confuse नहीं होना बोल के अपन क्या लिए, capital letters लिए. Okay, c 2 cancel means h value is minus lm a square. Substitute the values. H value minus lm a square to the square. Okay, capital A value 1 minus a square l square. Capital B value 1 minus a square m square. Okay, so given that lines are coincident बोल के अपन कंडीशन लिए. कंडीशन क्या है, h square equals to ab. ओके, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, राइट? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, सॉरी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा. सिंप्लीफिकेशन, माइनस टू द स्क्वायर मीन्स प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए पावर 4. ओके, स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर
m square a square to the square means a power 4, okay, equals to 1 into 1 1, 1 into a square m square means minus a square m square. Next minus a square l square into 1 minus a square l square, okay. So minus into minus plus a square l square into a square m square, a square into a square, a power 4 l square m square. Clear? Okay, right. Total values इधर ले लेंगे, l square m square a power 4 plus 1 become minus 1, minus term become plus term, and minus term become plus term, and plus term become minus term, okay. A power 4 l square m square equals to 0. See, 1 into 1 1 into a square m square minus a square l square into 1 minus a square l square into minus a square m square, okay. See, l square m square a power 4 l square m square a power 4 आगे पीछे है बट प्रोडक्ट ही है ना, कैसे भी रहा तो चलता. एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए पावर 4 प्लस टर्म एंड माइनस टर्म, ओके. रिमेनिंग राइट फर्स्ट एल स्क्वायर टर्म ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ओके, माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ओके. कंडीशन जो पूछा रिक्वायर्ड कंडीशन ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. गिवन दैट लाइन्स आर कोइंसिडेंट बोले तो कंडीशन कोइंसाइड बोले तो कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी. एच वैल्यू 2 2 कैंसिल होता है, एच वैल्यू माइनस एल एम ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ए वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके. नेक्स्ट बी वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर m square a square to the square, and 1 into 1 1 into minus a square m square, minus a square l square into 1 minus a square l square into minus a square m square means plus a power 4 l square m square. वैल्यूज पूरा इधर लिए, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग लिखे, ओके. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ओके. जो कंडीशन पूछा वो कंडीशन. स्पेशली याद रखने का क्या है, ये रिमेनिंग तो अपन ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में करें, बट रिमेंबर लाइन्स आर कोइंसाइड मीन्स कंडीशन इज इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ओके. रिमेनिंग टोटल एज इट इज प्रीवियस प्रॉब्लम्स, बट ये 5 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम कंपलसरी आता है. जो अपन प्रॉब्लम्स बोले ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग क्वेश्चंस, गन शॉट लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड. नेक्स्ट एक 5 और 6 थ्योरम्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में. थ्योरम्स आर मस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गन शॉट प्रॉब्लम्स, गन शॉट थ्योरम्स, ओके. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से ये 5 प्रॉब्लम में से 99% 1 प्रॉब्लम आने की चांस है, एंड वन मोर थिंग थ्योरम आने की चांस है, ओके. थ्योरम्स आर आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली 5 और 6 थ्योरम्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ओके. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में थ्योरम्स वेरी इंपॉर्टेंट है. वी विल सी द थ्योरम्स इन नेक्स्ट क्लास, ओके. इफ यू लाइक द क्लास फटाफट लाइक कीजिए, शेयर करिए, अगर चैनल में नया आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके. थैंक यू.